Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Welcome all of you to today's session of Bhagavad Gita. And first of all, wishing you all once again a very happy Nirjala Ekadashi. Uh, we'll try to chant more and more rounds or whatever possible. तो सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें आज के दिन. एंड विल स्टार्ट विद प्रेयर्स. हम लोग जैसे हमेशा करते हैं हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कर्म पुनः धर्म संस्थापक का नाम हितकारिण्य परिक्रम्य मन शरण्य करे श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजना आनंदन मुक्तालिको सनातन हृदय श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टं मत्तः स्तुतिर्ज्ञानम् अपोहनं च विदुश्च सर्वै अहं वेदान्तविद् चाहं. हरे कृष्णा. सो थैंक यू. जैसा हमेशा करते हैं हम लोग विल do recap on what we did last week. Quickly, anybody would like to recall what we did last week? हमने पिछले हफ्ते क्या किया था? Nobody? Okay. चलो, what we English भगवद गीता आणि खिड़की खोलून टाक. So हमने what we did was we saw 3-4 shlokas. So where Arjuna is saying कि papam eva shreyadasman, by killing these atatais, they are atatai, and we have seen 6 type of atatai, means aggressor. Does anybody remember what were the type of aggressors? One who gives poison, one who sets fire to the house, one who attacks with a deadly weapon, one who loots the riches, a land grabber, and one who kidnaps the wife of another person. Thank you Mataji. So these are 6 atatais, and Arjuna is saying by killing these atatais, these aggressors, I will incur sin. So this is what he is saying, and we will see further that he calls Krishna as Madhava and a goddess of fortune. So if you are goddess of fortune, then why you are asking me to bring misfortune by engaging in this war? Then next he said next shloka, 2 shloka 37-38, he said that yadyap etena pashyanti logo apahata chetasah, their minds, their consciousness, everything is overcome by greed. लोभ से उपरत हैं ये लोग, तो हमें क्यों युद्ध करना है? इनको तो दिखाई नहीं दे रहा, they can't see, but I can see. So why should we are saying, why should we engage into that kind of acts?
And then he said, by this, what will happen? Kulakshay. The family will be destroyed and our friends will be killed. So I don't want the sins of killing family and my friends. He's saying, and then next shloka he says, uh, we are able to see this sin, so we should not engage into this act. And then last shloka what we saw is 39. Kulakshaya pranashanti kula dharma sanatanaha dharme nashte kula kristam dharma abhibhavat kutaha. So he said by the by ending the dynasty of the Kula, the family traditions will be Kula dharma will be vanquished, and if Kula dharma is vanquished, adharma abhibhavat. So adharma will give a rise. So we'll take today's shloka, which is shloka number 49. I am sharing it. Adharma abhibhavat Krishna. Adharma Vibhavat Krishna. Pradushyanti kulastriyaha. Pradushyanti Kulastriyaha. Strishu dushtashu varshneya. Trishu Dushtashu Vashneya. Jayate varna sankaraha. Jayate Varna Sankaraha. See translation. When irreligion is prominent in family, O Krishna, the woman in family become polluted, and from degradation of womanhood or descendant of Krishna comes unwanted progeny. So very nicely he's putting a point over here. We'll see that what he's saying. He's saying, see, if we see, if we go back, हम लोग पीछे जाएं तो हम लोग see from 37. He's saying the Kula will be destroyed, Kulakshay, and then he's saying we'll get sin for that. And if 39 he says if Kula is destroyed, then there will be adharma. Adharma will prevail. So now he's saying adharmat abhibhavat Krishna. When irreligion or adharma becomes prominent in the family, he's saying, oh Krishna, the woman of the family become polluted, and from the degradation of womanhood or descendant of Krishna comes unwanted progeny. Varna Sankara Jayate. So Varna Sankara is unwanted progeny. So I was hearing to one lecture of one Prabhu called Chaitanya Charan Prabhu. So he was saying unwanted progeny is not only like parents they are doing family planning and they don't want the kid. No, actually unwanted progeny is also uh, children or the a class of men who are unwanted by the society. So what does it mean? Means they are not according to dharma, or they are just creating havoc in the society. So such kind of people are unwanted. And he's saying if adharma prevails, Arjuna is saying if adharma prevails, the pradushanti kulastriya. Kulastriya that will become contaminated. And how is that? We'll see. Prabhupada is very nicely saying in the purport. Prabhupada's, I'll just read. This is very nice, and then we can discuss on this. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in the life. So, if we need a good environment or good place to stay, so what is the requirement? It is not like building big malls or having big towers or some fancy buildings or something to play and just park. That is secondary. Okay, that can be useful, but but the main reason is the main thing is that the people, they should be very very, you can say very according to who are acting according to dharma, जो धर्म के हिसाब से रहते हैं. If they are adharmis, then it becomes a chaos, even if the place is very nice. So we see many places in the world,
in our country. Like they may be very fancy, बहुत अच्छा है, बहुत सब facilities हैं, लेकिन just because the people are not nice, the crowd is not nice. People, like if we say take example of UP or Bihar, not Bihar. Bihar is a downtrodden place, but if you say Delhi and UP, this is like cities. But still, women after 7, they hesitate to go. Why is that? Because the population is not good. So this is one point he's putting. He's saying that Prabhupada is saying that a good population is a must. And how this good population comes? He's saying he says that Varnashrama religion's principle was so designed that the good population would prevail in the society for the general spiritual progress of the state, and this is all for the progress of the state and the community and country in a whole. So such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. So if uh, we can say, if ladies, if the stri varga, stri shu, what Arjuna is putting, is saying if they are chaste and they are faithful, then automatically the progeny also be very good. And if they are polluted, then automatically there will be further Varna Sankara, and there will be chaos in the society. So chastity of woman is very much required. And here we can say, like chastity means what, if we see, if we take Ramayan, अगर हम लोग रामायण देखते हैं, just if we see Ramayan, when Agni Pariksha was taken for Mother Sita, so when she was asked to go through that Agni Pariksha, so what she said was, even if in dreams I have thought of somebody else, some Parapurusha, I will burn into this fire. And then she came out. So that means chastity was so high that even in dreams they never thought of any other man. But now we see it's all because of Kali Yuga. It's degrading, and boys are thinking of girls. They have big posters. Same with the girls. They are always attracted to some attractive female, male or something like that. So this is bringing down the level of chastity, and this and now it's very bad to say, but because of Kali Yuga, there is a lot of extramarital affairs and lot of things which should not happen are going on. But this brings down the quality of the society and the quality of the dharma. So this is very much required to maintain, and this Prabhupada says that the whole thing depends on the ladies part, on the ladies and on the mothers, because if they are chaste, then automatically the children will be good, and further there will be no chaos in the society. So Prabhupada is saying here, as children are very prone to mislead, women are similarly very prone to degradation. Like it means, like he's saying, I'll read further. Both children and women require protection by the elder members of the family. And he says they are like very simple. So protection is there, like a small kid, like it's very easy. कोई भी आराम से उसको बना सकता है, अरे बेटा तू ये चॉकलेट ले चला जा मेरे साथ, and then he can kidnap him. Similarly, women also, they are very simple in their nature, and because of that it is very easy to exploit them. So that is why our Shastra says that women should always be protected, and they should never be left alone. Prabhupada always used to say, when a woman is small, she is protected by her father, and when she is grown up, she gets married and protected by husband, and when she is old, she is protected by the children. So that's the thing. They always should be protected. And then further, uh, it says that Prabhupada says, on the failure of Varnashrama Dharma, naturally the women become free to act and mix with men
and thus adultery is indulged in at the risk of unwanted population. So if there is no varnashram dharma, there is no proper dharma, then the act of adultery comes. Like what we are seeing now, there is a lot of extramarital affairs and all these things, and then because of that, then unwanted, this varna sankara, this comes out. So, and Prabhupada is very strongly putting this, he's saying irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. So, because of irresponsible men, it becomes their responsibility that they create such Varna Sankara, and because of this, there is a risk of war and pestilence. So, just can we think how just having if somebody is an extramarital affair, if somebody may think, oh, what's wrong, matlab. Nowadays, if we see, I will. People have become so casual. Even boys and girls, they have become very casual. There is nothing wrong. It's okay. The people are living in live-in relationships, and this 2 years, 3 years, and then they go away. They don't see each other. But this thing, how can it result to a war and pestilence? Can anybody think? Okay. See what happens when this kind of adultery is committed. Obviously, like Prabhupada is saying, the children will be unwanted, and they will not be following the dharma properly. And if they are not following the dharma properly, then they will be adharmic, and adharmic, they are always eager for creating a chaos in this. हमेशा मतलब समाज में कैसे है ना, अभी हम लोग देख भी रहे हैं this some class of people, they are always eager to create some kind of chaos in the society. कुछ ना कुछ हंगामा करना है, कुछ दंगा करना है. So this can result into war. So this is very dangerous. Prabhupada is putting. So this is what is there in shloka number 40, that we see Kulakshaya, from Kulakshaya adharma, and from adharma there is Varna Sankara. So this steps Arjuna is giving, and then further we will see shloka number 41. I will just share it. Is it visible now? Yes, Prabhuji, it's clear. Yeah, thank you. So we'll read the shloka. Sankaro narakayaiva Shankaro narakayaiva kulajnanam kulasya cha kulajnanam kulasya cha patanti pitiro yesham patanti pitaro yesham lupta pindodaka kriyaha. lupta pindodada kriyaha. Okay, so we'll see the translation. An increase of unwanted population certainly causes hellish life both for the family and for those who destroy the family tradition. The ancestors of such corrupt family fall down because of performance of offering food and water are entirely stopped. So further आगे अर्जुन बोल रहे हैं कि जब वर्ण संकर जब बढ़ेगा तो इट विल बी हेलिश उस फैमिली के लिए भी इट इज नरकायैव, एंड जिसके वजह से हुआ है, दैट मीन्स अर्जुन इज सेइंग कि आई एम द वन, I am fighting, and because of this it is destroyed, so I will also be getting sin.
so I will be put into hellish, मुझे नरक जाना पड़ेगा. So this is what he's saying, and he's saying what happens because of that. The act of we know we do pindadan, once in a year we do pindadan. So this Varna Sankara, they are not interested in all this kind of. Already we see now, like people even don't know about all this kind of things. There is pindadan has to be done, and tarpana has to be done. So what happens, they are not interested, and because of this what happens, because this what is happening, the pitaras, the forefathers who are there, so उनका जो है उनका भी पतन हो जाएगा, and they will be suffering because the process actually in the shastras if we see कि after the life, मतलब जब मृत्यु हो जाती है, then according to their karma, Prabhupada also puts that in the, मतलब प्रभुपाद जी purport में भी लिख रहे हैं कि किसी किसी का मतलब पाप इतना होता है कि दे सफर, बट सम आर सो सिंपल, इतना पापी होते हैं कि उनको मतलब कोई ग्रॉस बॉडी भी नहीं मिलता, तो वो दे स्टे इन गोस्टली बॉडीज, मतलब उनको मतलब भूत या पिशाच बन के रहना पड़ता है. सो फॉर दैट एक्चुअली ये सब जो पिंडदान, तर्पण, और गया में जो इतना बड़ा जो पिंडदान का के लिए जो बनाया गया है कि पीपल गो टू गया, वहाँ पे जाके पिंडदान करते. तो नाउ दिस ऑल इज स्लोली वेनिशिंग, ये सब खत्म होते जा रहा है. तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो पितर जो जहाँ ऊपर जा रहे हैं और जिनका उद्धार नहीं हो रहा, अगर वो भगवान के भक्त हैं तो इट इज ओके, उनका जरूर उद्धार होगा. लेकिन अगर वो भगवान के भक्त नहीं हैं, इफ दे आर नॉट डिवोटीज, देन दे विल स्टे इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म, एंड उनको मतलब वंस इन ईयर हम लोग जो पिंडदान करते हैं, दैट इज द ओनली थिंग दे गेट टू इट. लेकिन वो भी नहीं मिलेगा तो देन दे विल सफर. सो दिस इज नॉट गुड फॉर इवन द फोर फादर्स, एंड इज सेइंग ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस वन वॉर वी आर डूइंग, एंड आई एम द रीजन, बिकॉज आई एम गोइंग टू फाइट, मैं युद्ध करने वाला हूँ, मैं सबको मारने वाला हूँ, तो ये सब जो पाप है ये मुझे लगने वाला है. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा यहाँ पे पॉपट में लिखते हैं कि अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है. आई सेइंग वन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल लाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच एक्शंस. एंड प्रभुपाद जी यहाँ पे भागवतम का एक श्लोका बोल रहे हैं, 11वें अध्याय का, सॉरी 11th कैंटो 5th चैप्टर, श्लोका नंबर 41, विच इज देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कृत्यम कर्तम. तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम भी क्या बोलता है कि जो भगवान के भक्त हैं, जिसने एक बार मुकुंद, भगवान कृष्ण, मुकुंद, मीनिंग ऑफ मुकुंद, डज एनीबॉडी नो मीनिंग ऑफ मुकुंद? मुकुंद का मीनिंग क्या है? ओके, तो मुकुंद मीन्स मुक्ति देने वाला, मुकुंद, तो मुक्ति देने वाला जो है वो मुकुंद, एंड दैट इज ओनली लॉर्ड श्री कृष्णा, ओनली ही कैन गिव मुक्ति, नोबडी एल्स कैन. तो अगर कोई मुकुंद के अगर शरण में चला जाता है तो फिर उसको कोई भी किसी का भी मतलब ऋणी में रहना नहीं पड़ता. हम लोग देवताओं के ऋणी हैं, बिकॉज वो हमको वर्षा देते हैं, अग्नि देते हैं, वायु देते हैं, तो हम उनके ऋणी हैं. वी आर आंसरेबल टू देम, वी हैव टू पे आवर डेब्ट्स टू देम. फिर भूत, आप्त, देयर आर सो मेनी लिविंग एंटिटीज, देयर आर किंग्स, पितृणाम, आवर फोर फादर्स. सो इन सबको अपना जो है हम लोगों को बिकॉज ऑफ फोर फादर्स वी आर सर्वाइविंग नाउ, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर इज हैपनिंग नाउ, इट इज because of our forefathers. So we are indebted to them, so we have to pay back, and that is हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो ये सब. लेकिन अगर जो भगवान का भक्त है, मुकुंद का भक्त है, उनका शरण में आ गया,
तो उनको ये सब कुछ भी करने का जरूरत नहीं है उनको। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो उसको ये सब जो प्रोसेस है उसको ये फॉलो करना चाहिए, एंड उनको तर्पण वगैरह ये सब करना चाहिए। और उनके लिए जो भी कार्य है अपना रेगुलेटेड अवर वर्क विच इज टू बी डन, वो हमको करते रहना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो yeah, this is point what Srila Prabhupada is making here. And yeah, okay. So Arjuna is giving just briefly, if we want to see this, we'll say Arjuna is giving his reasons to stay away from war, and he's saying he will be creating destruction of the families, Kula, and then he will be creating lot of Varna Sankara, and again that will be chaotic for the society. And all this, I am the reason. So that's why he's saying I don't want to be reason, and I don't want to fight. Okay. I think till now, I think just Ashish Prabhu also said he has to go because he had some meeting or something. तो हम लोग 3 ही लोग बचे हैं। तो अगर if you want, if you have some doubts, we'll go slow. अगर आप लोगों का कुछ questions है, कुछ doubts है, I'm sure there will be doubts, so we can take that. If not, then we'll take further shlokas. प्रभु जी, श्लोका नंबर जो 40 था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे, क्योंकि उसका बहुत सारा बताया था, तो श्लोका का एक्चुअल मीनिंग था वो थोड़ा कर दिया था, समझ नहीं आया मुझे। माता जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, वापस बोल सकती हैं माता जी? वो श्लोका नंबर जो 40 था उसका मीनिंग एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? या ओके। उसमें अर्जुन जो कह रहे हैं कि अभिभवात अधर्म अभिभवात कृष्णा, मतलब जैसे हमने देखा कि अधर्म बढ़ेगा, तो बोल रहे जब अधर्म जब बढ़ जाएगा, तो जब फैमिली में भी जब अधर्म बढ़ जाएगा, तो जो घर की स्त्रियां हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी। और स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर, जब स्त्री जब प्रदूषित हो जाएगी तो फिर जो बच्चे होंगे वो भी वर्ण संकर होंगे, जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो अधार्मिक होंगे, मतलब। तो ये उसका अर्थ है माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। वैजी माता जी? No, I think it's fine for me. I'm able to understand, to this point. ओके, सो हम लोग फिर अगला श्लोक लेते हैं हम लोग। Okay. श्लोक का नंबर 42 आई विल जस्ट शेयर। If you are able to see, please let me know. Yes, Prabhuji, it's clear. श्लोक नंबर 42। दोषेर एते कुलज्ञानाम् दोषैरेते कुलज्ञानाम् वर्ण संकरकारकैः वर्ण संकरकारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्माः साध्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण। तो इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। By evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kind of community projects and family welfare activities are devastated. तो यहाँ पे अर्जुन अभी क्या कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा ये दुष्कृत करते हैं ऐसे, तो उससे क्या होगा? जाति धर्म और कुल धर्म,
उसका नाश होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्ण संकर कारक, इधर भी जैसे हमने लास्ट वो श्लोक में देखा था, वर्ण संकर ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है फैमिली ट्रेडिशंस नहीं है। बिकॉज हम लोग देखते हैं कि किसी घर में जो है जो माता है वो बच्चे को उसको संस्कार देती है, ये मत करो, ये करो, ये अच्छा नहीं, दिस इज गुड एंड बैड। तो जो मॉरल जो साइंस है पूरा, तो मदर इज द टीचर देयर, और वो उसको पूरा बताती है कैसा। लेकिन जब वर्ण संकर होगा तो इधर अनवांटेड प्रोजेनी, तो ऑटोमेटिकली ये सब जो चीजें हैं, ये जो नॉलेज है उसको नहीं मिलेगा, एंड देयर विल बी वर्ण संकर। एंड जब बच्चा ही वो जब बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली जो जाति धर्म है, जो बिकॉज एवरी फैमिली, एवरी कम्युनिटी हैज सम काइंड ऑफ ट्रेडिशंस, वो फॉलो करते हैं। तो इफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन धर्म तो ही विल नॉट फॉलो एनीथिंग, सो अल्टीमेटली स्लोली स्लोली, एंड ही इज नॉट फॉलोइंग, सो ही विल नॉट गिव टू हिज चिल्ड्रन। So the family values will be diminishing slowly. So this is what he is saying. Kula dharma and jati dharma, they will be destroyed. So this is this is the meaning of this shloka. We'll just see. Prabhupada has given very nicely in the purport that community projects for the 4 orders of human society, that is Varna Sankara, sorry, Varnashrama Dharma, which we are calling like that, 4 Varnas. So for 4 Varnas, these community projects are given and combined with family welfare activities. So as they are set forth by institution of Sanatan Dharma, our Sanatan Dharma has given all this Kul Dharma and Jati Dharma, and they are designed to enable human being to attain his ultimate salvation. तो ये सब जो है, जो कुल धर्म, जाति धर्म, ये सब क्यों बनाया, ताकि उस जीव जो है, दैट लिविंग एंटिटी हु हैज टेकन बर्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ही हैज टू गेट सैल्वेशन, ही उसको मुक्ति मिलना है उसको। तो ये जब वो फॉलो करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगा, लेकिन इफ इट्स नॉट फॉलोइंग देन इट इज गोइंग टू बी chaos। और फिर प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, देयरफॉर द ब्रेकिंग ऑफ सनातन धर्म, so therefore the breaking of Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of the society bring about chaos in the society. So यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि even the leaders of the society, they are responsible, वो उनका ड्यूटी है कि they see कि ये सब जो है अच्छी तरह से देख रेख हो रहा है, everything is going on properly, and that's why हम लोग देखते हैं पहले के जो राजा थे, they were so pious, they were so religious, और वो लोगों से भी धर्म कराते थे। एक एकादशी का व्रत है, आई डोंट रिमेम्बर विच, कौन सी वाली एकादशी है, उसका जो महिमा है उसमें ये कहा गया कि एक जो राज्य का राजा था, वो इवन अपने राज्य से, मतलब ही यूज्ड टू फोर्स देम कि यू कैन नॉट ईट, ये इट वाज क्लियरली डिक्लेयर्ड कि नो वन कैन ईट फूड ग्रेन्स इन हिज किंगडम, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन एनिमल्स। अगर एनिमल को मतलब दे आर नथिंग टू डू, मतलब जानवर है, उसको तो क्या पता, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट था कि वो उनसे जानवरों से भी एकादशी करता था। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग और द सोसाइटी लीडर, बट इफ दे देमसेल्फ दे आर पोल्यूटेड, देन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड व्हाट इज अल्टीमेटली क्या होगा कि सारे समाज में जो है हाहाकार मचेगा, देयर विल बी chaos इन द सोसाइटी, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। And आगे yeah, this is also very small shloka, nothing much to say in this, yeah, this is यही इसका मतलब है कि just to summarize we'll say कि by these evil deeds, ये ऐसे कुकर्मों से जो है जाति धर्म और कुल धर्म का नाश होगा, और कुल धर्म से फिर वर्ण संकर, और वर्ण संकर से सारा जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। एंड देन हम लोग लेते हैं श्लोका नंबर 43। आई जस्ट शेयर
उत्सन्न कुलधर्माणाम् उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुमा भवतीति अनुशुश्रुमा। मीनिंग देखते हैं। ओ कृष्णा, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. मैं एक बार इसका हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, just give me 1 minute. Just या हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पे अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं, ही इज कॉलिंग कृष्णा एज जनार्दन। भगवान कृष्ण को जनार्दन जनार्दन कह के पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। तो व्हाई इज दैट? मैंने देखा कि जनार्दन मीन्स जन का अर्दन करने वाले, जन उनके जन का पालन करने वाले। यहाँ कह रहे हैं अर्जुन, हे जनार्दन, मैंने ऐसा सुना है, भवती इति अनुशुश्रुमा। तो वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है या आई फील लाइक दिस, आई फील लाइक दैट। नो, सेइंग आई हैव हर्ड दिस। इट मीन्स इट्स अ राइट, मतलब एक तरीका है कुछ ज्ञान प्राप्त करने का। आजकल तो मतलब कहीं से भी कुछ भी सुन लेते हैं एंड दे रिपीट दैट, बट दैट्स नॉट द राइट प्रोसेस। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो आचार्य हैं, उनसे सुनना। और तो ये कह रहा है कि उनसे मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग इस कुल धर्म का नाश करते हैं वो नियतम नरके वासो, तो नरक में वो हमेशा वास करेंगे। तो अगेन ही इज गोइंग ऐसे, मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ नरक में नहीं जाऊंगा, लेकिन नरक में मुझे एटर्निटी तक रहना पड़े, शाश्वत, मतलब हमेशा मुझे नरक में रहना पड़ेगा। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो पुण्य करते हैं तो स्वर्गलोक जाते हैं फिर आते हैं, कुछ लोग होते हैं पाप करते हैं तो वो नरक में जाते हैं वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहा है कि अगर मैंने ये वाला पाप किया तो ये पाप से मैं नरक जाऊंगा एंड मैं हमेशा वहां पे नियतम वासो, नरक के नियतम वासो, मैं हमेशा वहां पे रहूंगा। सो मेरा क्या फायदा है, सेइंग दैट। मतलब वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि मुझे क्या फायदा, मैं तो युद्ध करूंगा, सब हो जाएगा, मैं नरक चला जाऊंगा, इनको मैं मार दूंगा, ये चले जाएंगे स्वर्ग में, इनको मार के, ये सब जो रीजन है जो अर्जुन ने दी, इसकी वजह से मैं नरक चला जाऊंगा, तो मुझे क्या फायदा, मैं तो एटर्निटी के लिए नरक में रहूंगा। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में इस ऑन दिस वर्स, उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसमें बोलते हैं कि ये जो वर्ड है मनुष्य नाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्यानाम जनार्दन। जो है ये जो कुल धर्म है ये सिर्फ जो है मनुष्यों का जो कुल धर्म है। अब वैसे अगर हम लोग देखें तो मतलब एनिमल्स दे बिहेव, कुछ भी करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसा भी करते हैं, रहते हैं, तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। लेकिन मनुष्य जो है ही इज आंसरेबल एंड ही हैज टू बी वेरी केयरफुल इन द वे ही बिहेव, इन द वे ही एक्ट्स, इन द वे ही रिस्पॉन्स, जो करता है उसको रिएक्ट करता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोग समाज में देखते हैं ऑल्सो कि कुछ लोग दिखते हैं मनुष्य, दे आर लाइक, दे लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे एक्ट very inappropriate way and they commit all kind of sins and they are doing everything wrong. So ये जो है this is मनुष्य, मनुष्य नाम उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्य नाम।
तो प्रभुपाद इज सेइंग दिस इज फॉर मनुष्य एंड हम लोग जो हैं एटलीस्ट भक्त तो बाद में बनेंगे, वी बिकम डिवोटीज लेटर, लेकिन पहले हम लोग को मनुष्य बनना है। वी कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मनुष्य, मनुष्य की तरह रहें और मनुष्य की तरह रहते फिर हम लोग जब भक्ति करेंगे तो धीरे 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 हम लोग फिर भक्त बनेंगे और भक्ति की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे अर्जुन जो है यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं तो नरक चला जाऊंगा। तो दिस इज वन थिंग एंड एक जो हमारे वैष्णव है चैतन्य चरण तो वो बोलते हैं कि अनुशुश्रमा जो है इवन जो पांडव थे तो वो जब अज्ञातवास में थे या 12 इयर्स का जो 12 साल का जो उनका वनवास था उसमें भी वो ऋषियों के साथ में रहते थे, उनसे सुनते थे, मार्कंडेय ऋषि और बाकी बहुत सारे जो ऋषि थे वहाँ पे ऐसे, तो उनसे वो श्रवण किया करते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए एंड वी ऑल्सो हैव टू फॉलो इट। हम लोग वो कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग आते हैं भगवद गीता सुनते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड यहाँ पे प्रभुपाद जी एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं कि one who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called प्रायश्चित्त। तो अगर कोई अगर पाप कर रहा है तो इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ इसी में उसको प्रायश्चित्त करना चाहिए, और वो प्रायश्चित्त नहीं करेगा तो देन इज गोइंग टू हेल। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल इन दिस shloka and then we'll take one more shloka number okay, it's time is up. Okay, I will but I'll do one thing, एक और ठीक है, चलो I will stop here and we'll take it next time. So 40, 41, 42, 43 हम लोग ने 4 श्लोक देखे हैं। तो इसमें अगर किसी पूजा जी या विजय माता जी आपको कोई प्रश्न है, कुछ डाउट्स है तो या कमेंट है कुछ आपको कुछ, वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। नो डाउट्स प्रभु जी। Yeah, thank you For me Mataji. also, I think it's clear because Arjuna is still giving his arguments as to why he should not fight, and he's starting from how first the family traditions will get destroyed, and then so step by step he's going, then the community, and then ultimately he's saying I'll be responsible for destroying all this, so don't make me fight. Yeah, it's not complicated, just giving his reasons. So it's very easy. Okay, so then I think if there is no question, no doubt, then we'll stop here and we'll continue. There is another 44, 45, 46 3 shlokas. We'll take it next time and then जो पहला अध्याय है वो खत्म हो जाएगा अपना, and then we'll start from second chapter. Okay, thank you very much पूजा जी, वैजी जी, हरे कृष्णा। Thank you Prabhuji, Hare Krishna. Wishing you वेरी हैप्पी एकादशी। आप दोनों को भी अच्छे से आज जप कीजिए एंड चैंट मोर एंड मोर। थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you Prabhuji, thank you, happy Ekadasi. कृष्णा।